motional electromotive force. When a conducting rod moves inside the magnetic field so that it crosses it, then an induced EMF is produced along the length of this conducting rod. This EMF is known as motional electromotive force. जब किसी चालक पदार्थ की छड़, कोई कंडक्टिंग रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उसके सिरों में, उसके एंड्स में अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. इस ईएमएफ को हम मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं. इसको यहाँ समझते हैं. सपोज कंडक्टिंग रॉड इज ऑफ लेंथ एल एंड इट इज़ मूविंग inside this magnetic field perpendicular to magnetic field with velocity v from right hand towards left hand side, and in this can slip on this U frame, conducting frame. This frame is of U shape. Magnetic field is perpendicular to the plane of the paper and inward, and its value is capital B. Suppose initially this rod is at this position P dash Q dash. In time interval delta t, this rod moves a distance delta x, and suppose velocity, magnitude of velocity of this rod is v. So after time interval delta t, this is in position pq. So magnetic flux enclosed by this area P dash S or Q dash is decreasing because area is decreasing. So there should be an induced EMF. Velocity of the rod V is equal to delta x upon delta t, or delta x is equal to V into delta t. If magnetic flux is phi1 at time t1, so this phi1 is equal to B into area P dash S R Q dash. B is magnetic field and area is P dash S R Q dash. This is equal to x plus delta x into length of this rod, length between these ends P and Q, because area is equal to this length x plus delta x and into L. So magnetic flux phi1 is equal to B into x plus delta x into L. When after time interval delta t, this conducting rod is at position pq, then area, this area is equal to L into x, because distance of this rod from RS is x. So magnetic flux at time t2, phi2 is equal to B into area PSRQ, this area PSRQ. So phi2 is equal to B into x into L. Now delta phi will be equal to change in magnetic flux in time interval delta t. This is equal to delta phi. This is equal to phi2 minus phi1. So this phi2 minus phi1 is equal to bxl minus b into x plus delta x into L. bxl cancel, so this is equal to minus b into delta x into L. Now rate of change of magnetic flux delta phi upon delta t is equal to minus bl into delta x upon delta t. According to Faraday's law of electromagnetic induction, induced EMF is negative of the rate of change of magnetic flux. So induced EMF is equal to minus delta phi upon delta t. This is equal to minus bl delta x upon delta t. Now delta x upon delta t is velocity, so E is equal to BLV, because this minus becomes plus. Now here induced EMF is produced because flux is decreasing. तो जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी कि वो इस फ्लक्स को डिक्रीज होने का अपोज करे. तो इसका अपोज कैसे कर सकती है? एरिया को, ये एरिया पर इसका कंट्रोल नहीं है क्योंकि एरिया तो इसके चलने से कम हो रही है. तो यहाँ एक
और फिजिकल क्वांटिटी है एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी वैसे फ्लो होगी कि इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करे। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज आएगी, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, दिस विल बी क्लॉकवाइज, क्योंकि जब इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड करंट की, in that case magnetic field produced will be perpendicular to the plane of the paper and inward. See in this diagram, when the direction of induced current is clockwise, so this in becomes south pole, and hence direction of magnetic field is perpendicular to the plane of the paper and inward. Now if rod is moving from left to right hand side, then induced current is produced because magnetic flux is increasing, so it will try to decrease the magnetic flux by Lenz law, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट जिससे प्रोड्यूस होती है उसको वो क्या करती है, अपोज करती है उसका। तो इस कंडीशन में इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि जब ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो जो करंट प्रोड्यूस होगी इसमें, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर और आउटवर्ड होगी, और इस कंडीशन में ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कर रही है। सो हेयर दिस लूप बिहेव्स एज ए साउथ पोल, दिस बिकम्स साउथ पोल एंड हेयर दिस बिकम्स नॉर्थ पोल। अब अगर ये सिंगल कंडक्टिंग रॉड है, ये किसी यू शेप कंडक्टर पे मूव नहीं कर रही है, केवल सिंगल कंडक्टिंग रॉड है और वी वेलोसिटी से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मैग्नेटिक फील्ड बी के परपेंडिकुलर मूव कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इनवर्ड, एंड लेंथ ऑफ दिस कंडक्टिंग रॉड इज एल। सो सी हाउ विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस फोर्स व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ induced current and what is value of induced EMF. So suppose Q charge transfers from P to Q. Now by Fleming's left hand rule, when this rod moves in this direction, then all the free electrons are also moving in this direction. So each free electron will experience if Lorentz force on one free electron F is equal to small e into V into B, where V is velocity of conductor and V is velocity of this free electron also, because with this conductor this free electron is also moving from left to right hand side. So force on positive charge by Fleming's left hand rule will be in upward direction. See this middle finger and this is forefinger and this is thumb, stretch them so that they are mutually perpendicular to each other. So forefinger is in the direction of magnetic field, this middle finger is in the direction of motion of charge particle. So force on positive charge will act along the direction of thumb, so force on negative charge will be opposite to it. So electrons will move from P end to Q end. So in this Q end becomes negative and this P end becomes positive. Now direction of current is opposite to direction of movement electron. So direction of induced current is from Q to P. Now if circuit is complete, see here, if circuit is complete then current will flow through this circuit, and if it is not complete as here, so this P end positive and Q is negative. So this is induced EMF. Now see what is value of this. So suppose Q charge transfers from P end to Q end, and force on this charge is equal to QVB, because force on one electron is small e into V into B, and suppose n electrons transfers, then this Q is equal to Ne. So total charge transferred is Q. Now work done by this force, work done is equal to force into displacement. Displacement is L.
सो वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू एल, दिस इज इक्वल टू क्यू वी बी इंटू एल। जो क्यू चार्ज इधर से इधर ट्रांसफ़र हुआ है ये एल लेंथ कवर कर रहा है ड्यू टू दिस लॉरेंस फोर्स। तो इस लॉरेंस फोर्स ने इसमें वर्क कितना किया, तो वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज वर्क डन in moving unit charge, so induced EMF is equal to W upon Q, so this is equal to VBL. So in this way we get same expression. अब जब हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज टुवर्ड्स Q to P, so force on negative charge is from P to Q, so positive charge is moving from Q to P and this is induced current, so direction of induced current is from Q to P. Now here is one more law which is known as right hand rules, Fleming's right hand rule. With that law we can also find out the direction of induced current. Stretch thumb, forefinger and middle finger of your right hand like this, and if thumb is in the direction of motion of the conductor, forefinger is in the direction of magnetic field, then middle finger will give you the direction of induced current. So see here direction of induced current is from Q to P. So this is by Fleming's right hand rule. So this is expression for induced EMF V into B into L if a conducting thin rod of length L moves perpendicular to magnetic field capital B with velocity V. Now due to the Earth's magnetic field there is always vertical component of Earth's magnetic field. तो जब ट्रेन मूव करती है तो जो रेल्स हैं, रेल्स के ऊपर ये ट्रेन का व्हील मूव कर रहा है, रोल कर रहा है, और ये एक्सिल की ये जो लेंथ है वो रेल्स के बीच की जो डिस्टेंस उसकी लेंथ के बराबर है. सो इट इज़ ऑलवेज क्रॉसिंग दिस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ. दिस इज़ ऑलवेज कटिंग दिस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ. तो ये फ्लक्स को कट करते हुए चल रहा है, क्रॉस करते हुए चल रहा है. तो इसमें भी ट्रेन्स के व्हील्स के बीच या ट्रेन्स की जो ये रेल्स हैं, रेल्स के बीच, इन बिटवीन द रेल्स एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड. सो इफ डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इज एल, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज स्मॉल v and vertical component of Earth's magnetic field is capital V. So induced EMF produced across the axle of the wheel, length of the axle of the wheel or between the two rails, this will be equal to V into capital V into L. Now suppose for example velocity of train is 72 km per hour which is equal to 20 meter per second, and at that point vertical component of Earth's magnetic field is 0.3 Gauss which is equal to 0.3 into 10 to the minus 4 Tesla, and distance between the rails is 1 meter. So induced EMF produced is equal to E into V into L. This is equal to 20 into 0.3 into 10 to the minus 4 into 1 which is equal to 0.6 into 10 to the minus 3 volt which is equal to 0.6 millivolt. Thanks. Have a nice day.